everyone. My name is Mandira. Welcome to AglaSem, and today we are going to be doing chapter number 5, class 12, Therapeutic Approaches. So in this chapter we are going to learn what psychotherapy is, what are the goals of psychotherapy, the different types of psychotherapies that are present out there, and how they can help someone overcome mental disorder. Okay? So इस चैप्टर में हमारी बहुत सारी चीजें जो they are a bit technical, but don't worry because we are going to do them all in a very easy way, and even from exam point of view this chapter is very important. So please make sure that you do this well so that you can answer all the questions in your pre-board and board exams. Okay, so let's get started with the chapter number 5, Therapeutic Approaches. So first in this chapter we're going to do the main heading, Nature and Process of Psychotherapy. अच्छा, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी में हम सबसे पहले ये पता करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज साइकोथेरेपी. ओके, सो लेट्स रीड द डेफिनेशन गिवन बाय एनसीईआरटी. Psychotherapy is a voluntary relationship between the one seeking treatment or the client and the one who treats or the therapist, and is given under therapeutic conditions. Okay, so the one who is seeking therapy, for example, if someone is suffering through a mental disorder, या फिर किसी को लाइफ में करियर काउंसलिंग की जरूरत है, any kind of issue that will take you to a psychologist, anyone has motivational problems, concentration problems, then you are more likely to go to a psychologist. So the person who is going is called the client, okay, and the person who is giving the therapy is called the therapist or psychotherapist, and they form a relationship that is called the Therapeutic Alliance, okay, and this is formed again in therapeutic conditions. So obviously there are certain rules and regulations to the relationship. How is therapist different from your friend, or how is a therapist different from your family, or how is a therapist different from your boss or your parent or authority figure? There are so many ways in which certain rules and regulations have been set in order to make this relationship as professional and as beneficial as possible. Okay, so let's first do the characteristics of the relationship. The characteristics of the relationship, number 1, all psychotherapies, basically अगर हम psychotherapies में भी बात करते हैं, first of all we're talking about therapeutic relationship. So the first therapeutic जो हमारा एक component होता है इसका, that is the contractual nature of the relationship. ठीक है? Then there is, so contractual nature of the relationship मतलब two willing individuals, the client and the therapist, enter into relationships which aims at helping the client overcome his problems. So it is a contract, okay? It is not something that, it's not like a friendship, it's not that informal, it is a formal relationship in the sense कि it is there for a fixed set of time, ठीक है? ऐसा नहीं है कि it will keep going on and on for like 3 years, 4 years. Maybe you have to go to the therapist for that long, that's fine. That the nature of the contract can be a bit longer. But for instance, जैसे हमारी friendships होती हैं, उनकी कोई validity थोड़ी ना होती है. जैसे अगर किसी की CBT हो रही है, so generally it is aimed at 9 to 12 sessions maximum में, या 20 sessions, 24 sessions, जितने भी according to the client's need, इतने में आपकी therapy खत्म हो जाए. So the therapist will always aim at making you more and more self-dependent on yourself. He will not make you dependent on himself or herself. That's why it is a contractual nature. So because उसको पता है कि as soon as the relationship has started, the therapeutic alliance has started, he knows that there is an end to it. उसको ये चीज खत्म भी करनी है, ठीक है? So it is a contractual nature. एक there is also a contract in which there are lots of clauses of confidentiality, as you have read before in class 11 also. There's informed consent. बहुत सारे legal clauses भी added होते हैं इसमें. That's why it is a very contractual relationship. The next point is the limited duration of the therapy that I was just explaining. That it is not a lifelong kind of, it's not a friendship, it's not a companionship. It is just when you need it. So it is for a limited period of time. When you start therapy and as it proceeds, your psychologist will make a timeline of when to end the therapy also. Okay? Because he does not want you to be always dependent on the therapist. Okay, so there are some of the properties also. It is a trusting and confiding relationship. That means you can tell your therapist whatever you feel like in a very non-judgmental kind of environment, and he has to provide you very warm and positive environment where you can tell him all about your worries. ऐसा नहीं है कि you will be really you'll be facing a lot of judgment, or the therapist will tell you what is right and wrong. Never ever will a therapist tell you that something is right or wrong. He will just listen to you in a kind and calm manner, and you are to make the decisions of your life. ठीक है? So the high level of trust enables the client to unburden himself or herself to the therapist and confide in his or her psychological or personal problems. Exactly.
तो ये जो साइकोथेरेपी होती है, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रिंसिपल्स दैट आर देयर. जैसे हमने पहले भी पढ़ा है स्कूल ऑफ अप्रोचेस, है ना, साइकोडायनेमिक स्कूल ऑफ अप्रोच, बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ अप्रोच. सिमिलरली हम ना इसमें भी वी विल लर्न व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ अप्रोचेस टू साइकोथेरेपी. तो अब जो हमारा थेराप्यूटिक अलायंस अच्छे से हमने समझ लिया, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ बिट ऑफ साइकोथेरेपी एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स. So the first characteristic of psychotherapy is the systematic application of some theory or principle. So for example, साइकोडायनेमिक थ्योरी में ये थ्योरी है कि अनकॉन्शियस जो डिजायर्स है हमारी, उसके कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते हम लोगों को वी फेस सर्टन काइंड ऑफ मेंटल इश्यूज, राइट. So based on this therapy, we will apply a set of principles that will help us resolve those unconscious issues. Okay, so any kind of, और यहाँ पे behaviorist approach है, तो it will be based on faulty learning patterns, क्योंकि वो उनकी theory है. So every kind of psychotherapy is based on one or the other theory that is out there. Okay, the therapist must be a trained professional. Exactly. So there is a certain level of education that you must take in order to give someone therapeutic advice, or you should have a license, you should have clinical practice training होनी चाहिए आपकी पूरी, minimum 2 to 3 years. You have to be clinically trained in a hospital environment. Okay, then only you can become a trained professional, then only you are trained to give therapy to other people. Okay, then there is psychotherapy is an interactive process in which two people are involved, the client and the therapist, as I already explained कि दो इसमें components हैं, client का component and therapist का component. अच्छा, psychotherapy functions under therapeutic relationship, which is trusting, accepting, confiding, dynamic professional relationship. It's a very professional relationship, although it is very warm and trusting, and you can disclose whatever you like to them, but it is still very professional. Okay, so for example, if someone discloses any kind of criminal act or child abuse, for instance, in many states like Australia, the therapist becomes legally bound to disclose it to the authorities. So it is still a professional relationship. Okay, so there are some of the goals of the psychotherapy. जो हमारे उसके goals भी हैं. Reinforcing the client's resolve for betterment, मतलब हमारे जो symptoms हैं उनको कम करना, हमारे को betterment की तरफ लेके जाना. Lessening emotional pressure. If the client is under any kind of pressure, then you have to remove that, lessen that, reduce that. Unfolding the potential for positive growth, basically leading the client in a way where he can unravel his own full potential. Okay, modifying habits, especially habits that are unhelpful. For example, procrastination is a very unhelpful habit. So something to look for in therapy is when you go there, they will tell you different techniques in order to overcome procrastination. ठीक है? Changing thinking patterns. अगर आपके कोई भी faulty thinking patterns है, for example, everybody leaves me alone all the time, ये faulty thinking pattern है, then obviously they will remove and replace them with more helpful thinking patterns. Increasing self-awareness about who you are and who you want to become. ठीक है? Improving interpersonal relationships. If you're having any kind of problem in your life, unable to foster long-term relationships, then yes, they can pinpoint what is or what all mechanisms are going on, क्या-क्या चीजें जो आपको relationships foster करने से रोक रही है, and they can help you with that. Okay? Facilitating decision making. अगर आप if you are indecisive person and you can't figure out between A and B and you take too long, then that is a good thing to discuss in therapy. Become aware of one's choices in life. Again, the same thing. Then relating to one's social environment in a more creative and self-aware manner. Basically, making the person a more holistic and a more, self-actualized person in life. ठीक है? That is the goal. अगर आप देखो overall. Okay. So next we come to the next subheading, which is therapeutic relationship, जो हमने काफी हद तक पहले भी discuss कर लिया. We discussed the properties of it. But there are 3 terms here that we really need to discuss, which are number 1, unconditional positive regard. अच्छा, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड क्या होता है? अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब क्लाइंट, वट एवर द क्लाइंट थ्रोज एट यू डजंट मैटर, यू हैव टू बी पॉजिटिव टुवर्ड्स द क्लाइंट. ओके, आई विल गिव यू एन एग्जांपल, आपको उससे क्लियर हो जाएगा कि अनकंडीशनल में और कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड में क्या फर्क होता है. कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है कि अगर आपके 25 में से 22 मार्क्स से ज्यादा आए, then only you will be taken to the zoo or you will be taken to some kind of amusement park. This is called conditional positive regard. If then वाला जो होता है ना, that is अगर कोई भी sentence if और then से शुरू हो रहा है, इस format में है, then it is always conditional positive regard. ठीक है? Unconditional positive regard is as long as you're working hard, it does not matter how many marks you get, you will still get to go to the zoo or you will still get to go to the amusement park. That is unconditional positive regard. Okay? Basically
पॉजिटिविटी जिसकी कोई भी कंडीशन नहीं है, अनकंडीशनली यू आर गिविंग इट. Okay, the next term is empathy. Empathy is putting yourself in another person's shoes. Okay, so how is empathy different from sympathy? This is a very important question in life and during the exam. Empathy में क्या होता है? You are trying to empathize with another person. You are trying to communicate that you know how it feels to be in the shoes of another person. For example, if someone is going through depression, then you can just sit quietly and listen to them about their experiences. If they want to share, if they don't want to share, you can just give them the space and tell them that you are available. If they, in case in the future they want to share, you are not pressing them to share anything. Okay? And you can say that even I have been in a dark place before and I can relate to you. You are not alone here. I'm with you. That's it. ये होती है हमारी empathy. Sympathy क्या होती है? अगर someone is going through a depressive phase and you are telling them कि चल यार मोमोज खाने चलते हैं, then this is sympathy. You are trying to distract them, divert them, है ना? You are not trying to relate to them कि क्या होता है कि चलो let's eat a sandwich or let's eat momos, या फिर at least कम से कम तेरी लाइफ में ये तो बुरा नहीं हो रहा, at least ये तो अच्छा है, at least. तो any kind of sentence that usually starts with at least, it is very rarely an empathetic sentence. ठीक है, it will always be a sympathetic sentence. Silver lining कर रहे हैं हम उनकी प्रॉब्लम्स की. ठीक है, तो ये जो दोनों, और जो हमारा एक थर्ड एस्पेक्ट इसमें आता है, दैट इज दैट ऑफ confidentiality. Confidentiality is very important because, as I said, जो भी you are told by the client, the therapist is told by the client, he cannot disclose it to anybody, even the client's parents. कभी कभी पेरेंट्स की भी रिक्वेस्ट आती है कि आप बताइए कि ये क्या बोलते हैं थेरेपी के ड्यूरिंग. नो, the therapist will never tell any of the parents without seeking prior permission from his own client. ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको थेरेपी में जो आपने अपने थेरेपिस्ट को बताया वो किसी और को बताएगा, अपने सर्कल में या आपके सर्कल में, unless, as I said, there are certain kind of exceptions to that, कि अगर किसी ने वो किया है, कोई भी चाइल्ड अब्यूज के केस है, then in certain countries you have to disclose it to the authorities. Okay, now let's come to the next heading, which is the type of therapies. Okay, so ये हमारी साइकोडायनेमिक, बिहेवियर और एक्जिस्टेंशियल, हम यहाँ पे 3 मेजर टाइप की थेरेपीज जो है वो डिस्कस करेंगे. सो इनमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, दैट वी नीड टू कंसिडर. क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोथेरेपीज कैसे किया है हमने? इट इज बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ पैरामीटर्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग दोस पैरामीटर्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पैरामीटर इज व्हाट इज द कॉज विच हैज लेड टू द प्रॉब्लम. ठीक है, तो साइकोडायनेमिक थ्योरी थेरेपी ये सजेस्ट करेंगे कि जो आपके इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, एज आई टोल्ड यू बिफोर, अनकॉन्शियस में आपके जो फीलिंग्स इधर उधर हो रही हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, जो कि सोशली एक्सेप्टेबल वेज में एक्सप्रेस नहीं हो पा रही हैं, दैट इज लीडिंग टू मेंटल डिसऑर्डर. ठीक है, देन बिहेवियरिस्ट थेरेपीज में क्या होता है कि फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स की वजह से ऐसा हुआ है कि चाइल्डहुड में आपने कोई फॉल्टी लर्निंग पैटर्न लर्न कर लिया और एडल्टहुड में वो सारे रिलेशनशिप्स में एक्सप्रेस हो रहा है. ठीक है, एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है कि क्वेश्चन अबाउट वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस, आप उसमें कंफ्यूज हो, व्हाट एम आई हियर फॉर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कम इनटू प्ले. ठीक है, नाउ द सेकंड पैरामीटर इज हाउ डिड द कॉज कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, तो ऑब्वियसली साइकोडायनेमिक थेरेपी में देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कि जो आपकी एनल स्टेज है, ओरल स्टेज है, यू मस्ट हैव रेड ऑफ दो स्टेजेस इन आई थिंक चैप्टर नंबर 2 में हमने करी थी, self and personality में, so you can refer back to that video if you're confused. So those kind of stages are responsible for future conflict in the adulthood. ठीक है, तो अगेन जो हमारा बिहेवियरिस्ट पर्सपेक्टिव है, उन्होंने कंडीशनिंग पैटर्न्स को ब्लेम किया है कि कॉज जो है वो है फॉल्टी लर्निंग पैटर्न्स. ठीक है, और जो एग्जिस्टेंशियल हमारे वो हैं, दे आर सेइंग दैट लोनलीनेस, एलियनेशन, सेंस ऑफ फ्यूटिलिटी, मतलब अकेलापन, all these kind of things are coming into play to become the cause of the disorder. Okay, then the next parameter we are going to look at is chief method of treatment. Obviously psychodynamic therapy में psychodynamic approaches use होंगी, जैसे कि free association, dream analysis, अभी हम आगे पढ़ेंगे in detail. Here it's just bit of a snapshot here. तो सिमिलरली बिहेवियरल थेरेपीज में ऑल्टरनेट बिहेवियरल कंटिंजेंसीज, डोंट वरी, ये टर्म्स अगर आपको कंफ्यूज करिए, डोंट वरी, वी आर गोइंग टू डू देम ऑल. ये थोड़ा एनसीईआरटी में ना एक कंफ्यूजिंग पैटर्न में दिया हुआ है, बिकॉज इट्स गिवन बिलो, सो आई एम एक्सप्लेनिंग इट, बट हम लोग इसको अच्छे से अभी आगे जाके करेंगे, सो डोंट वरी. एक्जिस्टेंशियल में इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एक्सेप्टिंग एनवायरमेंट, नॉन जजमेंटल एनवायरमेंट का जो वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिल जाए तो दैट्स ग्रेट. ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप इज आवर फोर्थ पैरामीटर. उसमें क्या है कि किस टाइप का रिलेशनशिप है
क्लाइंट और थेरेपिस्ट में। साइकोडायनेमिक में क्या है कि थेरेपिस्ट इज एन इंटरप्रेटर, ठीक है, ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स। बिहेवियरिस्ट में क्या होता है कि थेरेपिस्ट विल एक्टिवली टेल यू विच थॉट्स आर फॉल्टी एंड हाउ टू रिप्लेस देम। एक सॉर्ट ऑफ देयर इज मोर ऑफ द इंडल्जेंस हियर, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स एग्जिस्टेंशियल में इट इज मोर ऑफ दैट, यू नो, द क्लाइंट इज merely listening to you and छोटा छोटा he is steering you in a good direction, but उसमें actively इतना participation नहीं है. He is just providing you a passive warm environment. Okay, so then there is the chief benefit to the client, which is the fifth factor. Psychodynamic theory में emotional insight, पता चलना कि हमारी internal desires कि कौन सी ऐसी इंटरनल डिजायर्स है जिनकी वजह से हमारे माइंड में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं. बिहेवियर थेरेपीज में आपकी जो हेल्प होगी, चीफ बेनिफिट इज दैट यू विल चेंज योर फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न्स, ठीक है. और एग्जिस्टेंशियल में आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है, दैट इज योर मेजर बेनिफिट, ठीक है. ड्यूरेशन इट्स अ बिट यू नो वेरी ऑन हियर एंड देयर. साइकोडायनेमिक में बहुत सारे साल लग जाते हैं, सेवरल इयर्स, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वेरी पॉपुलर अमंग कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिस्ट, ठीक है. सेवरल, अच्छा, इसमें जो कई 15 या 10 सेशन में भी you can complete it. Behavior and cognitive are also very short term therapies as compared to psychodynamic, ठीक है. इतना ज्यादा years and years of treatment नहीं लगता, ठीक है. So ये हमारे हो गए different parameters on which हमारी therapies are divided, ठीक है. So now we will come to the first main therapy, which is that of psychodynamic therapy, ठीक है. Psychodynamic therapy पे आ जाते हैं हम लोग. Obviously, when you hear the word psychodynamic, who comes into your mind? Sigmund Freud, because he was the founder and forefather of this of this therapy. तो अच्छा, इसमें क्या होता है? First of all, what we need to think about is कि what are the methods of eliciting the nature of intrapsychic conflict. इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक I'll give you some sort of what do you call it context around it. Again, to recap, साइकोडायनेमिक सजेस्ट्स कि आपकी इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से, रिमेंबर, ईगो, सुपर ईगो एंड इट, एंड अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस एंड कॉन्शियस, इन सब के जो आपस में एक लड़ाई चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है डिजायर्स का, अनकॉन्शियस डिजायर्स का, प्री कॉन्शियस से, प्री कॉन्शियस का कॉन्शियस से, आपस में जो ये थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उनकी वजह से हमारे इमोशनल डिस्टर्बेंसेस अराइज होते हैं और उसी की वजह से हमारा मेंटल डिसऑर्डर प्रोड्यूस होता है, ठीक है. सो what they basically focus on is that whatever our unconscious desires are, they are either based on sex or they are based on aggression. I'm giving you a recap from chapter number 2. So because these two values are not as socially acceptable, we are not able to express them outwards जितना हमें we want them to express. तो इस वजह से हमारे माइंड में बहुत सारे इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, हमारे माइंड में बहुत सारे we face a lot of issues and that leads to the birth of a mental disorder. अब हम आते हैं कि how to fix this, ठीक है. दो चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस हुई है. फ्री एसोसिएशन की बात करते हैं. फ्री एसोसिएशन क्या होता है? फर्स्ट विंडो टू पीप इनटू द अनकॉन्शियस. हाउ डू यू फाइंड आउट व्हाट दोस अनकॉन्शियस डिजायर्स आर, ठीक है. तो ऑब्वियसली अगर कोई भी चीज है जो हमको परेशान कर रही है, वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट व्हाट इट इज. सो he said that unconscious में देखने के लिए one of the easiest methods is through free association. Free association क्या होता है कि after the therapeutic relationship is established, client feels comfortable, therapist makes the client lie on the couch very comfortably, close their eyes and ask them to speak whatever comes to their mind without censoring it, ठीक है. चाहे कोई कितनी भी inappropriate या appropriate चीज हो according to the client, once he is lying down, the therapist will say, बोलो क्या बोलना है तुमको, जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है उसको बोलो, ठीक है. क्लाइंट प्रोवाइड्स अ वर्बल नरेशन, मतलब वर्ड्स में ही डिस्क्राइब्स व्हाट इज कमिंग इन हिज माइंड, ठीक है. ही इज एनकरेज्ड टू फ्रीली एसोसिएट वन थॉट विद अनदर. फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक फ्री एसोसिएशन का एग्जांपल देती हूँ कि यू आर सिटिंग इन अ काम एनवायरनमेंट, व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ? So I'm thinking of an apple. Why am I thinking of an apple? Probably because I'm hungry. And why am I hungry? Because I wasn't given food during lunchtime. Why wasn't I given food? Because my mom was busy. So I'm feeling really angry towards my mom. अब वही एक apple से लेके anger towards your mom. This is exactly what Sigmund Freud was hoping to get out from the client. ठीक है? So इसको कहते हैं free association. अच्छा, अब इसमें एक रिलैक्स्ड और ट्रस्टिंग एटमोस्फियर होना चाहिए. ऑब्वियसली इवन साइकोडायनेमिक थ्योरी इट रियली फोकसेस ऑन अ रिलैक्स्ड एंड ट्रस्टिंग एटमोस्फियर, ठीक है. एंड थेरेपिस्ट विल नेवर इंटरप्ट ड्यूरिंग अ साइकोडायनेमिक प्रोसेस. जो आपके दिमाग में आ रहा है बोलते जाओ. ही विल नॉट आस्क क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी मम्मी के टुवर्ड्स आपका एंगर है, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फीलिंग हंग्री एंड शी वाज बिजी. नेवर.
So he'll keep, you know, whatever is coming to your mind, just keep it flowing. ठीक है. Next हमारा आता है dream analysis. Dream analysis में क्या होता है? Client is asked to write down his or her dreams upon waking up, and dreams are symbols of unfulfilled desires of the unconscious. Okay, dreams are symbol. उसको ऐसा लगता था, Sigmund Freud को ऐसा लगता था that whatever comes in our dream is basically a symbol of what is happening in our unconscious. Okay, because dreams पर हमारा कोई control नहीं है. Similarly, जैसे thoughts जो हमारे दिमाग में आ रहे हैं उन पे हमारा कंट्रोल कम होता है. उसी by the same logic, whatever dream is coming to us, we have no control over. So he told them कि लिखो whatever is coming to your mind when you are dreaming. Okay, whatever is coming in your dreams, उसमें unfulfilled desires आपकी unconscious की express होंगी. ठीक है. If unfulfilled desires are expressed directly, the ever vigilant ego will suppress them, leading to anxiety. तो for example, अगर आपने dream में कुछ inappropriate देखा, जैसे for example आपने dream में देखा that you're killing your teacher or something, right? I mean, hopefully not, but if it is something as inappropriate and anxiety provoking as that, you will not be able to say it out loud in front of the therapist. So that was the logic of Sigmund Freud, कि आप you tell me directly what is coming in your dreams and without any kind of, you know, hesitance from your side. Okay, symbols were interpreted according to an accepted convention of translation and indicators of unfulfilled desires and conflicts. So I have read that book. It's also available on Kindle if you like. Sigmund Freud has written a book about dream interpretation. If you are interested, उसमें हर dream का अलग interpretation according to Freud है. I think, for example, if I think उसमें एक I once googled a bit of, you know, a dream association, and हमारे जैसे for example one of the dreams he was describing is that if someone is dreaming of getting married himself or herself, then I looked it up and it said that means your future, that in the near future you will experience some sort of positive change in your life if you are a woman, but not if you are a man. So if a dream, you know, if you're dreaming of a wedding that is yours, your own wedding, अगर आप खुद की शादी के बारे में सपने देख रहे हो, then yeah, you will, if you're a woman, then something positive will come. If you're a man, then something negative will come out of the dream. One of the interpretations provided by Freud, I think, as far as I can remember, this was the one. ठीक है. इस तरीके से different n number of thousands of scenarios of dreams, he has written a book in which he has given all the, you know, all the different kinds of meanings according to him. Okay. अब हम आते हैं next topic में, which is the modality of treatment. इसमें हमारे बहुत ही important points आएंगे. ठीक है. First of all, we have to talk about transference. Transference क्या होता है? The client starts identifying the therapist with an authority figure of the past, usually childhood. For example, if someone had a strained relationship with their father, then because this, you know, the client starts to see the therapist as a person who is in the position of power, he will start to associate the client with his father. ठीक है? क्योंकि his father was the authority figure when he was younger and he had a strained relationship with his father. ठीक है? तो इसमें जो होता है, the therapist maintains a non-judgmental and permissive attitude and allows the client to continue with the process of emotional identification. So the client allows this कि ठीक है, if you're identifying with, you know, somebody, if you're identifying me with someone in your life, in your past life, then it's all good. Okay. Transference neurosis पढ़ते, the therapist becomes a substitute for the person in the present. The client acts out frustration, anger, fear that he has harbored towards that person in the past but could not express at that time. Sort of catharsis पे based है ये, कि आपकी जो पहले का frustration था वो आप अब निकाल दो, जो आपकी strained relationships में था, that will lead to a sort of, you know, relaxation in your mind कि चलो जो मेरे पुराने conflicts थे वो अब resolve हो गए. Very typical, you know, movie वाला idea of psychology. Positive transference, जिसमें client idealizes, falls in love with the therapist, ये भी हो सकता है. Either it will be positive transference, जिसमें you are really in love with the therapist and you are really identifying them with a positive figure in your life, or negative sort of transference भी हो सकता है, जिसमें client has feelings of hostility, anger and resentment towards the therapist. Whatever floats your boat. Okay. The next topic we're going to do is resistance. Resistance क्या होता है? The client opposes the progress of therapy in order to protect himself or herself from recall of painful unconscious memories. So resistance हर therapy का part होता है. Although psychodynamic में it is explicitly mentioned,
but resistance is part of most therapies. So the other day someone was telling me that my therapist was really mad at me that I did not attend a session, and I told her that I clearly didn't have enough motivation to attend it, and she was so rude to me that she cancelled my 3 months ka therapy aage ka. So that is not the way to go. I mean, even Sigmund Freud knew that resistance client ki taraf se aayega hi, because he is feeling uncomfortable when his desires are being exposed, or when any kind of faulty pattern is being exposed. So it's very important to maintain a warm environment out there. ठीक है? It's okay if you're not able to come, you can come for the next session. Okay? इसमें unconscious और conscious resistance होती है, जहाँ पे conscious resistance में client deliberately will hide some information, and that's very natural. और unconscious resistance is कि he will make very very trivial excuses, और बड़े ही surface level appointments में experience रहेगा कि बहुत ही कैसा गया दिन, ठीक गया, अच्छा, और बस ठीक गया, not willing to expose a lot of information about whatever happened. Okay, then the third part of the modality of treatment comes is the interpretation. Interpretation क्या होता है? The therapist uses the unconscious material that has been uncovered to make the client aware of his psychic contents. इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि साइकोडायनेमिक थ्योरी में जो थेरेपिस्ट है उसका मेजर रोल होता है एज एन इंटरप्रेटर. ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन करनी है उसको कि अब जो भी क्लाइंट ने मुझे बोला, व्हाट डज दैट मीन. ओके, एंड दैट द सैड पार्ट अबाउट साइकोडायनेमिक थ्योरी इज दैट क्लाइंट ने क्या बोला, उसका क्या मतलब है, दैट उसको डिसाइड करने का एक ही अथॉरिटी फिगर है, विच इज सिगमंड फ्रॉइड. सो देयर हैव नॉट बीन अ लॉट ऑफ debate and discussion about this, because the whole psychodynamic theory is based on case studies by Sigmund Freud. So it is one of the major shortcomings that one person is the god of the therapy. So you have to agree कि अगर dream analysis में marriage का मतलब for a woman means positive changes, it is, because Freud says so. Okay? So critically analyze करना भी आना चाहिए theory को कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है. That is very important skill. Okay? So अच्छा, इसमें 2 एनालिटिकल टेक्निक्स भी हैं इंटरप्रिटेशन में. उसमें क्या होता है, कॉन्फ्रंटेशन एंड क्लैरिफिकेशन. कॉन्फ्रंटेशन में क्या होता है, थेरेपिस्ट पॉइंट्स आउट टू द क्लाइंट एन एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर साइकी दैट मस्ट बी फेस्ड बाय द क्लाइंट, कि फेस करो इस चीज को, दैट दिस इज योर डिजायर. ओके, एंड क्लैरिफिकेशन में द थेरेपिस्ट ब्रिंग्स वेग और कंफ्यूजिंग इवेंट इनटू शार्प फोकस बाय सेपरेटिंग, हाईलाइटिंग इंपॉर्टेंट डिटेल्स. फॉर एग्जांपल, पास्ट में अगर किसी की अपने फादर से एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लड़ाई हुई है, देन ही विल लिटरली पिन पॉइंट करेगा एंड ही विल टेक यू बैक टू दैट टाइम कि ये चीज तब हुई थी, दैट इज अफेक्टिंग योर लाइफ राइट नाउ. ओके, सो वर्किंग थ्रू आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, इन विच देयर इज रिपीटेड प्रोसेस ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन. बार बार इन दोनों प्रोसेस से और इंटरप्रिटेशन से क्लाइंट को बार बार उनके डिजायर से और उनकी फीलिंग से एक्सपोज कराया जाता है. Okay, then there is insight, which is the final step in the modality of treatment, a gradual process where the unconscious memories are repeatedly integrated into conscious awareness. जो आपकी unconscious थी वो integrate होती जा रही है conscious awareness में, so you are feeling better about yourself. Okay, इसमें आपका end point आ जाता है psychoanalysis का. Client gains a new understanding of his or her own conflicts, and that makes him feel much more in control of his or her life. Okay, intellectual insight में क्या होता है, the client starts understanding himself or herself at an intellectual level. ठीक है, और emotional insight में क्या होता है कि emotional insight में the emotional understanding, acceptance of one's irrational reaction to an unpleasant event of the past, and the willingness to change emotionally as well as making the change. So this is insight on an emotional level. Okay, कि कैसे हमारा जो पुराने इमोशंस थे, हाउ दे आर गेटिंग अफेक्टेड नाउ, ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, देन द ड्यूरेशन ऑफ द ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, विच इज द नेक्स्ट सेमी टॉपिक है हमारा छोटा सा. इसमें इनिशियल फेज में क्लाइंट बिकम्स फेमिलियर विद 4-5 दिन पर वीक. बहुत ही इंटेंसिव थेरेपी है ये, और you already read it can take several years to get through this therapy. Initial phase में client becomes familiar with the routines, establishes a therapeutic relationship, rapport formation होता है. ठीक है, और superficial बातें होती हैं सिर्फ. मिडिल फेज में ट्रांसफरेंस होती है, रेजिस्टेंस होती है, और कॉन्फ्रंटेशन, क्लैरिफिकेशन बेसिकली मिडिल फेज में ही सबसे ज्यादा काम होता है. और थर्ड जो हमारा फेज होता है, दैट इज टर्मिनेशन, मतलब खत्म करना. Relationship with the analyst is dissolved and the client prepares to leave the therapy. Now that you know what your unconscious desires and feelings, conflicts are, you are an integrated person and you need to face your own life. अब आपका therapy खत्म हो रहा है. Okay, so this roughly concludes half of the chapter, and in the next part of the chapter we are going to do behavior therapy. So now we're going to do the second part of the chapter,
जिसका फर्स्ट टॉपिक हम करेंगे दैट इज बिहेवियर थेरेपी. सो इन द लास्ट पार्ट वी डिड अ बिट ऑफ साइकोडायनेमिक. अब हम नेक्स्ट अप्रोच को टुवर्ड्स मूव करते हैं विच इज बिहेवियर थेरेपी. So behavior therapy में the names that come into mind are B.F. Skinner, Ivan Pavlov, Albert Bandura. ठीक है, ये सब हमारे social learning और classical conditioning ये वाले और operant conditioning वाले. ठीक है. So इसमें क्या है? They did not focus that much on the past. As we already discussed in psychodynamic theories, there was a lot of focus on childhood and past strained relationships. बिहेवियर थेरेपी में उन्होंने बोला आज की प्रॉब्लम आप बताओ कि क्या है. ठीक है. द पास्ट इज रेलेवेंट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ओरिजिन्स ऑफ द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न्स, नॉट रीलिव्ड. ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट की मेमोरीज को रीलिव करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू गेट a resolution from them. No, that's not the case. बल्कि you tell me your presenting problem. ठीक है. जैसे कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. If someone is depressed and feeling really anxious, then if you tell them कि आपके फादर के साथ आपका रिलेशनशिप पास्ट में कैसा था, maybe even if they come to know those desires and those sort of unconscious conflicts, they will feel even more anxious after therapy कि अब और ज्यादा मुझे पता चल गया what is wrong with me. ठीक है. So that's why the behaviorist reform came into action कि आप अभी बताओ अभी की प्रॉब्लम क्या है. अभी की प्रॉब्लम ये है that I procrastinate. So that is a very presenting problem. ठीक है. इन्होंने वहां पर फोकस किया. तो it consists of a large clinical application of theories. तो large set of clinical theories हैं हमारी, उनको applicable करते हैं हम बिहेवियर थेरेपी में. स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस हमारे पास हैं. सिम्टम्स ऑफ द क्लाइंट एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस आर द गाइडिंग फैक्टर्स. तो इसमें जो फोकस है ना वो सिम्टम्स पे है, डायग्नोसिस पे है, साइंटिफिक ज्यादा है ये अप्रोच. ठीक है. ऑल्सो दिस हैज बीन डन ऑन एनिमल्स, दिस हैज बीन डन ऑन न्यूमरस इंडिविजुअल्स. दिस इज वेरी गुड रिपीटेबिलिटी. फ्रॉइड के एक्सपेरिमेंट्स को पता नहीं कोई रिपीट कर पाया या नहीं, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट्स को आप रिपीट कर सकते हो विद योर डॉग और इवन साइंटिस्ट कैन रिपीट विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल. ओके. सो मेथड ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं. इसमें द क्लाइंट इज इंटरव्यूड विद अ व्यू टू एनालाइज हिज और हर बिहेवियर पैटर्न्स कि किस तरीके से व्हाट इज द कहते हैं ना टिपिकल वे ऑफ योर बिहेवियर, और ऐसी कौन कौन सी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स हैं आपकी लाइफ में जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं. सो देन द सेकंड फेज कम्स दैट इज बिहेवियरल एनालिसिस यहाँ पर भी होता है. यहाँ पे क्लाइंट का रोल काफी अच्छे से ज्यादा रोल है. यहाँ पे क्लाइंट का भी और थेरेपिस्ट का भी बहुत ज्यादा रोल है. वहां पर जो रोल है वो ज्यादातर क्लाइंट का ही है, थेरेपिस्ट का कम रोल है. बस इंटरप्रिटेशन में लास्ट में रोल है ना. इसमें जो क्लाइंट का रोल है वो बड़ा एक्टिव, थेरेपिस्ट का रोल बड़ा एक्टिव है. कोई बात होगी थेरेपिस्ट विल टेल यू, फिर कोई बात होगी थेरेपिस्ट विल टेल यू. साइकोडायनेमिक में ये है बोलते जाओ एंड लास्ट में जाके वो आपको एक अपनी शीट सी बना के दे देंगे कि ये लो जी आपका है, ये आपके अनकॉन्शियस थॉट्स है, ये आपके डिजायर्स है. ठीक है. सो हियर इट इज वेरी एक्टिव अप्रोच, नॉट पैसिव अप्रोच. So the first thing we are going to do is firstly हम behavioral analysis किस चीज का कर रहे हैं. हम कर रहे हैं malfunctioning behaviors का, behaviors which cause distress to the client. जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था प्रोक्रेस्टिनेशन इज मतलब मैं आज का काम सोचता हूँ चलो कल कर लूंगा, और फिर मतलब सोचता हूँ कि चलो ये चैप्टर करना है बट लेट्स वॉच नेटफ्लिक्स राइट नाउ, आई विल डू इट टुमारो. देन कल भी ये सोचता हूँ आई विल डू इट टुमारो अंटिल द डे ऑफ द एग्जाम एंड देन आई पैनिक एंड आई कैन नॉट सिट इन द एग्जाम. ठीक है. दिस इज अ maladaptive malfunctioning behavior. Okay. Then antecedent factors को डिस्कस करते हैं. Those causes which predispose the person to indulge in that kind of behavior. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्रोक्रेस्टिनेशन का एग्जाम्पल लें तो ऐसी कोई भी कॉज विच इज प्रीडिस्पोजिंग द पर्सन टू इंडल्ज इन दैट बिहेवियर. For example, a simple example would be the availability of Netflix on your computer, the availability of a distraction. ठीक है, that is predisposing you. Antecedent effect है. या फिर अगर हम बहुत ही ज्यादा डीप में जाएं तो if your parents had procrastinating tendencies, तो आपको उससे मिली है या नहीं, that is for the client, for the therapist to decide whether that is an antecedent factor or not. ठीक है. मेंटेनिंग फैक्टर्स भी होते हैं which lead to the persistence of a faulty behavior. For example, एक बार किसी ने प्रोक्रेस्टिनेट किया एंड देन लास्ट में जाके 2-4 अपना फटाफट दिन में पढ़ लिया एंड वो पास हो गए. दैट इज अ मेंटेनिंग बिहेवियर. द पास होना इज द मेंटेनिंग बिहेवियर ऑफ द प्रोक्रेस्टिनेशन. मतलब मैं साइंस के टेस्ट में पास हो गई, हो तो लास्ट में पढ़ के हो तो गया था पास, सो अब मैथ्स के टेस्ट में भी आई विल डू द सेम, हिंदी के टेस्ट में भी आई विल डू द सेम. ओके, दैट इज द मेंटेनिंग बिहेवियर, मेंटेनिंग फैक्टर. Okay, third point we're going to discuss here is that of the aim. अच्छा, behaviorist therapy का aim होता है to eliminate faulty behavior and substitute them with adaptive behavioral patterns. ठीक है, हमेशा उनका यही aim है कि जो भी आपके faulty procrastination को हटा के हम ऐसा behavior ले आए जिसमें you are motivated to do something there and then. Okay,
मैलअडैप्टिव बिहेवियर हट गया और आपका एक अडैप्टिव बिहेवियर आ गया। ओके, सो इसमें एंटीसीडेंट ऑपरेशंस, एस्टैब्लिशिंग एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस, AEC नॉट ABC, तो यहाँ पे हम इनका भी थोड़ा सा कर लेते हैं, देन वी विल डिस्कस द टेक्निक्स। ठीक है, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस होते हैं कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रीसीड्स द बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपके दिमाग में ये थॉट आए कि लेट्स वॉच, लेट मी जस्ट कल कर दूंगा ये चैप्टर, मेरे दिमाग में जैसे ही ये थॉट आया तो वो करने से पहले मैं क्या कर रहा था उस पर फोकस करना। मतलब अगर लेट्स से कि अगर मैं बेड पे लेट के पढ़ रहा हूं, ठीक है, एंड देन मेरे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि यार लेट्स डू इट टुमारो, तो हम उस एंटीसीडेंट ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं। वी कैन सिट अपराइट ऑन अ डेस्क एंड टेबल एंड देन होपफुली दैट थॉट विल नॉट कम टू आवर माइंड। ओके, एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? इंड्यूस अ चेंज इन द बिहेवियर बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। अगर मैंने आज ये चैप्टर कर लिया, देन आई विल वॉच 30 मिनट्स की जगह 1 आवर ऑफ नेटफ्लिक्स। ठीक है, दैट इज अ रीइंफोर्समेंट। और अगर एक डिक्रीज करना है बिहेवियर को, तो हम पनिश भी कर सकते हैं किसी को। जैसे कि अगर मैंने आज ये नहीं किया, देन आई विल गिव अप माय फोन फॉर 1 वीक। दैट इज अ पनिशिंग बिहेवियर। ओके, तो I mean, yeah, let's not get into the technicalities of reinforcement and punishment here. But yeah, अगर आपको किसी का बिहेवियर डिक्रीज करना है किसी चीज के लिए, then you are doing this. ठीक है, consequent operation में आ जाते हैं। consequent operation is giving reinforcement, that is praise. जैसे मैंने आपको बताया कि नेटफ्लिक्स की जगह आप ये बोल दो कि आपके ट्यूशन सर ने बोल दिया कि अरे वाह, आज आपने ये वाला कर लिया, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, that दिस विल बी डन, then that is a praise. Okay, consequent operation. अब हम आते हैं छोटी छोटी बिहेवियरल टेक्निक्स पे, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो छोटी छोटी हमारी टेक्निक्स थेरेपिस्ट यूज करते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव। ठीक है, फर्स्ट इज द नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, फॉलोइंग एन अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स विद एन आउटकम दैट इज पेनफुल और नॉट लाइक्ड। रीइंफोर्समेंट हमेशा उस चीज के लिए यूज होता है जिसमें आपको बिहेवियर इंक्रीज करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू इंक्रीज द बिहेवियर ऑफ क्लीनिंग योर रूम। तो अगर आपकी मम्मी यहाँ पे चिल्ला रही है कि रूम साफ नहीं रखते हो, उठो साफ करो, आई वोंट गिव यू फूड अंटिल यू क्लीन योर रूम एंड ऑल दोस सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, देन इन ऑर्डर टू एस्केप हर वॉइस यू विल क्लीन द रूम। ठीक है, सो हर वॉइस, जो नैगिंग उनकी आवाज है या जो उनकी चिल्लाने का बिहेवियर, येलिंग बिहेवियर है, दैट इज कॉजिंग यू टू इंक्रीज द बिहेवियर ऑफ क्लीनिंग योर रूम अगेन एंड अगेन। सो दैट इज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, इफ यू आर कंफ्यूज्ड अबाउट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और हमारा जो positive punishment and negative punishment, then I have explained it really well and in much detail in the chapter learning, chapter number 6, class 11. Please watch that video. आपको लाइफ में कभी इस कॉन्सेप्ट में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट वे we're going to do is aversive conditioning, repeated association of an undesired response with an aversive consequence present reality. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल दिस कंडीशनिंग इज यूज्ड इन पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन सब्सटेंस और अल्कोहल। उन पे बहुत यूज होता है कि आफ्टर दे विल गिव सर्टेन सॉर्ट्स ऑफ मेडिकेशन टू देम, कि आफ्टर दे इंजेस्ट अल्कोहल दैट मेडिकेशन विल कॉज वेरी वेरी बैड इफेक्ट्स और बहुत गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, पेट की प्रॉब्लम्स, पेट में दर्द हो जाएगा या बहुत इंडाइजेशन एंड नोजिया हो जाएगा। ऑल दीज प्रॉब्लम्स द मेडिकेशन विल कॉज। ठीक है, इस टाइप की जो फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइम बिफोर इंजेस्टिंग अल्कोहल उनको वही वाली याद आ जाती है कि मेरे पेट में कितनी गड़बड़ हो गई थी आफ्टर इंजेस्टिंग अल्कोहल, सो दे विल नॉट इंजेस्ट अल्कोहल। कंडीशन कर दिया उस रिस्पॉन्स को इन अ बैड वे, अवर्सिव कंडीशनिंग टू रिड्यूस सर्टेन सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। ओके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एज आई सेड, प्रेज इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट गिवन टू इंक्रीज द डेफिसिट इफ एन अडैप्टिव बिहेवियर अकर्स रेयरली। ठीक है, मतलब अगर आपने आज सॉरी चैप्टर खत्म कर दिया, then your tuition sir will probably really praise you. That is a positive reinforcement. ठीक है, increasing in behavior through addition of a stimulus that you like. Token economy, you can do this on yourself as well. Given a token as a reward every time a wanted behavior occurs, which can be collected and exchanged for a reward. ठीक है, तो for example ये dogs में भी हम लोग कर सकते हैं। If we are training them to sit, तो वो 3 बार बैठेंगे, then we will give them a treat. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आप उस तरीके से उनके रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हो। ह्यूमंस में इट इज मच इजियर टू डू दैट। यू कैन गिव योरसेल्फ अ स्टार एवरी टाइम यू फिनिश अ चैप्टर, एवरी टाइम यू मीट योर डेली टारगेट, एंड यू कैन अवेल दोज स्टार्स फॉर एन आउटिंग विद अ फ्रेंड और फॉर अ वेरी गुड मूवी ऑन नेटफ्लिक्स और एनीथिंग लाइक दैट, और फॉर योर फेवरेट फूड। ओके, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट क्या होता है, अनवांटेड बिहेवियर कैन बी रिड्यूस्ड बाय नेगेटिव एंड वांटेड बिहेवियर कैन बी इसमें ये लाइन थोड़ी सी अजीब सी लिखी है, अगर आपको बिहेवियर रिड्यूस करना है देन ऑलवेज पनिशमेंट विल कम। रीइंफोर्समेंट आप नेगेटिव दोगे या पॉजिटिव, बिहेवियर हमेशा बढ़ेगा ही। दैट इज द एम ऑफ अ रीइंफोर्समेंट इज टू ऑलवेज इंक्रीज बिहेवियर। ठीक है, सो आई डोंट एग्री दिस लाइन, बट
आप रीइंफोर्समेंट में नेगेटिव और पॉजिटिव दे के यू कैन डिफरेंशियली आप उसको ट्रेन कर सकते हो किसी को भी. एंड सिमिलरली यू कैन गिव पनिशमेंट्स ऑल्सो टू इंक्रीज और डिक्रीज एनी काइंड ऑफ बिहेवियर. ओके, रीइंफोर्समेंट से यू कैन इंक्रीज बिहेवियर एंड पनिशमेंट से डिक्रीज. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ये फोबियाज के ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूज होता है और ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि विच बिहेवियरल टेक्निक इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज. इट इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. ओके, इसमें क्लाइंट इज इंटरव्यूड टू इलिसिट fear provoking situations. जैसे कि किसी को स्पाइडर से फोबिया है, सो स्पाइडर दे विल बी फर्स्ट ऑब्वियसली दे विल टॉक एंड कैसे पता चलेगा उनको कि स्पाइडर से फोबिया है. द क्लाइंट विल टेल द थेरेपिस्ट. With the client, therapist prepares a hierarchy of anxiety-provoking stimuli with least at the bottom and most at the top. तो मतलब एक staircase आप समझ लो आपके सामने बना हुआ है जिसमें first step जो है वो सबसे कम anxiety provoking है और 10वां step सबसे ज्यादा anxiety provoking है in context of a spider. For example, number 1 step will be looking at a picture of a spider, ठीक है, and number 10 will be holding a spider in your hand. Okay, so अब उसमें क्या होता है, एक एक स्टेप चढ़ा चढ़ा के आपको क्या होता है, पीक एंजाइटी पे ले जाके द क्लाइंट विल लीव यू कि चलो आज का सेशन खत्म. देन दूसरे स्टेप पे ले जाके आज का सेशन खत्म. देन थर्ड स्टेप पे ले जाके फॉर इंस्टेंस सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप फर्स्ट स्टेप करो, ये पिक्चर देखो स्पाइडर की. उस स्पाइडर की पिक्चर को देख के आपको बहुत एंजाइटी होगी, बट देन यू विल लर्न टू कंट्रोल इट, यू विल काम योरसेल्फ डाउन. सेकंड में वो बोलेंगे ये देखो दिस इज अ 3D पिक्चर ऑफ अ स्पाइडर, तो वो थोड़ी ज्यादा रियल होगी. थर्ड स्टेप में मे बी दे विल से कि उस दूसरे रूम में एक स्पाइडर है, इमेजिन करो दैट स्पाइडर इज सिटिंग देयर, इट इज मोर एंजाइटी प्रोवोकिंग. देन इस रूम में करो, देन यहाँ पे करो, एंड सिमिलरली दे विल एक्सपोज यू टू द स्पाइडर 10th हायरार्की तक, जब तक यू आर एबल टू कंफर्टेबली बी इन अ रूम विद स्पाइडर और होल्ड अ स्पाइडर इन योर हैंड. But yeah, like why will you hold a spider in your hand? But that is I'm just giving you an example कि that would be the most fearful situation. आप धीरे धीरे करके you will keep going on step by step and achieve that situation that you want to achieve. Okay? So systematically आप desensitized हो रहे हो fear के लिए. You keep overcoming your fear. So you are becoming the fear is not affecting you anymore. ठीक है? तो next we come to the modeling technique, which is the last one here. इसमें वाइकेरियस लर्निंग भी है. मॉडलिंग क्या होती है, याद है वो बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट बाय एल्बर्ट बैंड्यूरा. उन्होंने बताया था कि चिल्ड्रन हु सॉ वायलेंस हैपन ऑन इन अ वीडियो एक्चुअली वर बीटिंग देयर टॉयज अप, बीटिंग देयर बोबो डॉल्स अप, है ना. सो इसमें अच्छा है कि रोल मॉडलिंग इट्स गुड. थेरेपिस्ट अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह भी ले सकते हैं कि इफ थेरेपिस्ट इज कम्युनिकेटिंग विद यू कि अगर मेरी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होगी तो प्रोबेबली मैं ये वाली अप्रोच यूज करूंगा. You can obviously learn from their behavior, or you can choose a role model in your own life, your father, your mom, anyone who deals effectively with the demands of the external environment. Okay? Vicarious learning क्या होती है? Learning by observing others. For example, अगर आप छोटे हो and आपके जो बड़े सिबलिंग हैं उनको कोई किसी एल्डरली का सामान उठाने के लिए somebody is praising, then you are more likely to learn that behavior through watching them get rewarded. मम्मी पापा ने बहुत प्रेज किया कि वेरी गुड, यू हैव ग्रेट मैनर्स, यू हेल्प द एल्डरली पर्सन, सो यू विल ऑल्सो हेल्प द एल्डरली पर्सन. दिस इज कॉल्ड वाइकेरियस लर्निंग. ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है कॉग्निटिव थेरेपी का. सो यहां तक हमारी बिहेवियरिस्ट अप्रोचेस, बिहेवियरिस्ट टेक्निक्स खत्म हो गई है. सो आई होप दैट वाज क्लियर टू यू. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक्स. ओके, नाउ वी विल डू cognitive therapy. Okay, so let's quickly get on with it. Cognitive therapy में क्या होता है? Rational emotive therapy by Albert Ellis and Aaron Beck's cognitive therapy. ये दो हमारी therapies explained है. कुछ ज्यादा इसमें मतलब there is nothing new that we haven't done before. We have mostly covered, so I'll quickly browse through this. इसमें क्या है? Antecedent effect, irrational behavior, और ये दो चीजों बहुत अच्छे से डिस्कस्ड है. So antecedent effect क्या है? ABC एनालिसिस, एंटीसीडेंट बिलीफ कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं एंटीसीडेंट की. वेयर क्लाइंट इज इंटरव्यूड एंड द कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इज नोटेड. कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पाइडर वाला एनालिसिस था कि मुझे स्पाइडर से बहुत ज्यादा डर लगता है, एंटीसीडेंट एनालिसिस. ठीक है, देन बिलीफ एनालिसिस. थेरेपिस्ट आइडेंटिफाइज द इरैशनल बिलीफ्स डेवलप्ड बाय द क्लाइंट व्हिच आर डिस्टॉर्टिंग द रियलिटी. ठीक है, फॉर एग्जांपल सेकंड बिलीफ एनालिसिस में वो आपसे पूछेंगे आपको स्पाइडर से इतना डर क्यों लगता है? Because the spider, if it bites me, it will kill me, है ना? Probably the client will say that. Then the therapist has to clarify कि ऐसा तो नहीं है. In 90% of the spiders and 90% of the people, when the spider bites a person, अगर काट भी लिया तो भी the person will not die. ठीक है? These kind of beliefs are changed. Consequence analysis हमारा लास्ट आता है. Distorted perception of the antecedent event due to irrational belief lead to consequences, negative emotions or behaviors.
देन द थेरेपिस्ट विल आस्क कि आपको जब ऐसा लगता है that you will die or that the spider will bite you and you will die, what kind of emotions you experience? Then they will say, I panic, my heartbeat starts, starts racing, or I start getting palpitations, मुझे चक्कर आने लग जाते हैं, start feeling, dizzy, all these kind of phobia, जो हमारे typical phobia के symptoms हैं, वो बताएंगे. ठीक है? So non-directive questioning is very important term here. Non-directive questioning के through a process by which irrational beliefs are basically refuted by therapist, but in a very threatening kind of manner. बड़े प्यार से बात होती है. तो नेचर ऑफ द क्वेश्चनिंग इज जेंटल विदाउट प्रोबिंग और बीइंग डायरेक्टिव. ऐसे नहीं कि अरे तुम पागल हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि स्पाइडर अगर नहीं काट लिया तो तुम मर जाओगे, ये कैसी पागलों वाली बात है. दिस इज वेरी बैड वे ऑफ क्वेश्चनिंग समबडी. गुड वे ऑफ क्वेश्चनिंग इज दैट व्हाई डू यू थिंक. अच्छा आप एक बात बताओ, ऑब्जेक्टिवली स्पीकिंग, कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप कितने लोगों को ऐसे जानते हो जो स्पाइडर जिन्होंने स्पाइडर से कटे और वो बेचारे मर गए. सो ऐसी नॉन डायरेक्टिव पोलाइट जेंटल वे में क्वेश्चन करना. ठीक है. सिमिलर प्रिंसिपल्स आर देयर इन एरनबैक्स कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें कोर स्कीमास का बहुत इंपॉर्टेंस है. बेसिकली दे सजेस्ट कि हमारे कुछ ऐसे कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हमारे बेस में होते हैं माइंड के, और वो ही हमारे बाकी के एक्सपीरियंसेस ड्रॉ कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ द बेस ऑफ माई माइंड इज सजेस्टिंग अगेन एंड अगेन कि आई एम अ यूजलेस पर्सन, देन अगर मेरे से छोटी सी भी गलती हो जाएगी ना, आई विल कंप्लीटली स्पाइरल बैक टू दैट मेन बिलीफ जो हमारा कोर स्कीमा थी कि आई एम अ यूजलेस पर्सन. अगर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है और मैंने फॉर एग्जाम्पल ये बुक गलती से नीचे गिरा दी, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में थॉट आएगा आई एम अ यूजलेस पर्सन. ये नहीं कि मतलब हो सकता है कि अर्थक्वेक आ रहा हो, या हो सकता है कि मेरा हाथ लग गया हो, एक्सीडेंटली गिर गया हो. कितने सारे लोगों से एक्सीडेंटली गिर जाता है. नहीं, आई एम अ यूजलेस पर्सन बिकॉज दैट इज द कोर स्कीमा. इन्हीं कोर स्कीमास को जो डिफेक्टिव है उनको ट्रीट करके ही थॉट दैट थेरेपी कैन मूव ऑन. ठीक है. Similarly, very associated concept with this is cognitive behavior therapy, CBT, which is the best, not objectively, but according to me, the best therapy and the therapy which has the most empirical support. सबसे ज़्यादा papers इसी therapy पे लिखे गए हैं. It is very, very well accepted. Okay, इसमें short, comprehensive, effective method for a wide range of psychological disorders like anxiety, depression, panic attack, biopsychosocial approach use करते हैं. ठीक है. बायोलॉजिक भी लेते हैं अकाउंट में, एंड साइकोलॉजी एंड ऑल्सो सोशल फैक्टर्स. ठीक है. इट्स अ वेरी वेल इंटीग्रेटेड अप्रोच. नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक ऑफ ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल. इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है. एज यू हैव ऑलरेडी रेड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मीन्स रीचिंग योर फुल पोटेंशियल. तो एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में हम लोग क्या करते हैं कि इट्स कॉल्ड लोगोथेरेपी. यहाँ पे एक डिस्कस्ड है. फर्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एग्जिस्टेंशियल थेरेपी ओनली. ठीक है. ट्रीटमेंट फॉर द सोल बाय विक्टर फ्रैंकल. विक्टर फ्रैंकल की लाइफ में ना बहुत ज्यादा सैड रही थी. ही वॉज पार्ट ऑफ, आई थिंक ही वॉज पार्ट ऑफ द मिलिट्री, एंड देन ही हैड अ लॉट ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस. वो आई थिंक 6 या 7 बार मरते मरते बचे थे. दैट्स वाई उनकी लाइफ में ये मीनिंग मेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंस था कि वॉट इज एग्जैक्टली द मीनिंग ऑफ लाइफ. That is something you will realize when you are very close to death. Okay, so and that he had experienced 7 or 8 times. So that's why I think that has really influenced the formation of this therapy. इसमें he said spiritual and unconscious is the storehouse of love, aesthetic awareness and values of life. The goal of this therapy, existential therapy, was to help patients find meaning and responsibility in their life circumstances. ठीक है. तो नेक्स्ट हमारा आता है क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी बाय कार्ल रॉजर्स. इसमें एम्पैथी, वार्मथ और अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बहुत वैल्यू है, जो हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ा. एम्पैथी आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू, पुटिंग योरसेल्फ इन समवन एल्सेस शूज. वार्मथ, feeling secure, making the client feel very secure so that he can disclose to and trust the therapist. Unconditional positive regard मैंने आपको अच्छे से explain कर दिया था in the starting of the video कि it is different from conditional positive regard. Unconditional मतलब whatever the client throws at you, you have to be positive towards them. Okay. Finally, we talk about Distort Therapy, जिसका गोल होता है to increase an individual's self-awareness and self-acceptance. Client is taught to recognize the bodily processes and emotions that are being blocked out from awareness. Okay, so ये basically making a person feel more holistic. ठीक है. More than the sum of its parts. पढ़ा था ना हमने Gestalt में, उनका वही वाला theory है यहाँ पे. Then next we come to one of the main headings, which is biomedical therapy, जिसमें antipsychotic drugs होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर के लिए बहुत सारे मेडिसिन यूज होती हैं. इवन फॉर डिप्रेशन मेडिसिन आर यूज. जो आप साइकाइट्रिस्ट के पास जाओगे,
देन ही विल गिव यू बायोमेडिकल थेरेपी, ठीक है। तो माइल्ड ड्रग्स हम रिकमेंड करते हैं इन कंट्रोल्ड मैनर, फॉर एग्जाम्पल क्लोनाजोपैम है, या फिर बहुत सारे तरह ड्रग्स SSRIs होते हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा होगा, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, या फिर साइकोटिक जो बीमारियां होती हैं उनके लिए अलग टाइप्स ऑफ ड्रग्स होते हैं, ठीक है। ऑलवेज इन द रिकमेंडेशन ऑफ अ मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल, जिसमें साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा साइकाइट्रिस्ट का रोल है, ठीक है। The next one is electroconvulsive therapy, which is ECT. ECT के बारे में बहुत सारे there's lots of stereotypes and there is lots of myths, but it's not like 1% भी it is not like that. जो it is shown in the movies की बहुत ज्यादा शॉक दे रहे हैं, बहुत ही हाई वोल्टेज शॉक्स लग रहे हैं लोगों को, एंड दे आर ट्रेम्बलिंग ऑन दोज शॉक्स, ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत ही लो वोल्टेज शॉक होता है. दिस इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, मिर्गी जो होती है उसके लिए भी ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है. इन अ वेरी रिलैक्स एनवायरमेंट the client is given a certain sort of उनका एक माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक उनको दिया जाता है, जो इन द मोस्ट टाइम्स उनको ज्यादातर फील भी नहीं होता, कि इतना ज्यादा शॉक फील भी नहीं होता. इट इज जस्ट कि वो जो उनके ब्रेन वेव्स होते हैं वो उनको अफेक्ट करता है. इट इज ऑल्सो वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है. तो बहुत ही नॉन कॉन्फ्रंटेशनल एंड रिलैक्स्ड एनवायरमेंट वाली थेरेपी होती है ये. ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसे करके वो 1 घंटे तक उनको शॉक दे रहे हैं या पागल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज ऑल myths and lies that are propagated by the media. You can also watch a very good video on YouTube. आप गूगल कर सकते हो electroconvulsive therapy and they will show you the modern way of electroconvulsive therapy. जितना confrontational एक EEG और MRI होता है ना, उतना ही electroconvulsive therapy होता है, nothing more. Okay, so इसमें obviously mild electric shock given via electrodes to the brain to induce convulsions, ठीक है, जिसमें आपके actually neurological deficits अगर हो गए हैं, for example आप आगे जाके पढ़ोगे बहुत सारी ऐसी हमारी मेनिया में बीमारियां होती हैं जिसमें ब्रेन वेव्स को आपको ठीक करना पड़ता है. सो दैट इज डिलीरियम कहते हैं उस बीमारी को, जिसमें लॉट ऑफ ECT इज गिवन, और इन सीवियर केसेस ऑफ डिप्रेशन. सो दैट इज व्हाट इट इज यूज्ड फॉर. ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट topic, which is that of factors contributing to healing. Obviously therapeutic alliance किस नेचर का है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो चीज डिटर्मिन करेगी आप कितना ज्यादा जल्दी आपकी हीलिंग होती है. टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल CBT यूज हो रही है या ECT यूज हो रही है, वो ऑब्वियसली कैथारसिस, दैट इज अनबर्डनिंग, हाउ मच यू आर एबल टू अनबर्डन ऑन द थेरेपिस्ट. एंड ऑब्वियसली पेशेंट वेरिएबल्स की वो कितना चेंज होना चाहते हैं, थेरेपिस्ट वेरिएबल्स, दैट हाउ गुड ऑफ अ थेरेपिस्ट पर्टिकुलर पर्सन इज. एथिक्स की भी बात करेंगे, हैव ऑलरेडी रेड अबाउट एथिक्स, बट शॉर्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं. इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ऑब्वियसली जो भी थेरेपी हो रही है उसके बारे में बताना, एंड टेकिंग परमिशन. कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट डिस्क्लोजिंग एनी काइंड ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द क्लाइंट. एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस, मतलब डिस्ट्रेस को कम करना, बढ़ाना नहीं है, ठीक है. मोटिव लाइक साइकोडायनेमिक में कई लोगों की शायद बढ़ जाए. इंटेग्रिटी, मतलब नॉट हैविंग एनी अदर काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद द क्लाइंट, इट्स अ वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप, ठीक है. ऐसा ज्यादा मतलब इट्स अ वेरी वार्म रिलेशनशिप बट नॉट ओवर फ्रेंडली. रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी. तो एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ऑब्वियसली यू हैव टू बी अ ट्रेन्ड प्रोफेशनल, ठीक है. 2-3 हम ऑल्टरनेट थेरेपीज भी डिस्कस कर लेते हैं. दैट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर. योगा, एक्चुअली इट्स अ वेरी इफेक्टिव थेरेपी जो हमारी बॉडी पोस्चर से रिलेटेड, हमारे जैसे कैटाटोनिक डिसऑर्डर्स हैं या उस टाइप के जो डिसऑर्डर्स हैं, उसमें बहुत अच्छे से बॉडी पोस्चर मूवमेंट इट रियली हेल्प्स. और योगा कभी कभी अगर आप यू विल डू विक्रम योगा और वेरी हार्डकोर योगा, उसमें आपका बहुत सारा यू विल स्वेट अ लॉट, सो इट विल रिलीज एंडोर्फिन्स, उससे भी काफी अच्छा होता है. इट इज गुड इफेक्ट. Meditation or Sudarshan Kriya, it has been very effective in the treatment of PTSD. So that is very good. You can follow that. Kundalini Yoga, Vipassana meditation. Meditation में क्या होता है? Focusing your attention on one object for a very long time increases concentration as well. ठीक है. और इसमें माइंडफुलनेस भी होती है, फोकसिंग ऑन द प्रेजेंट. अगर मैं अभी ये वीडियो बना रही हूँ, आप अभी ये वीडियो देख रहे हो, फोकसिंग ऑन दैट रादर देन फोकसिंग ऑन आपको आगे क्या करना है या डिनर में क्या बना है, या फिर डिनर खाते खाते कोई मूवी ना देखना. डिनर पे फोकस करना कि रोटी कैसी है, सब्जी कैसी है, हाउ डज इट फील इन योर माउथ, हाउ डज इट टेस्ट इन योर माउथ, फोकसिंग ऑन दैट, ठीक है. लास्ट टॉपिक इज रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल. ये हमने पहले भी अच्छे से बात करी थी इसमें इन द चैप्टर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, बट आई विल स्टिल एक्सप्लेन इट टू यू बिट point wise. Rehabilitation क्या होता है? To empower the patient to become a productive member of the society to the maximum extent possible. Even though someone has been through a mental disorder, you have to rehabilitate them into the society. मतलब
इंटीग्रेट देम इनटू द सोसाइटी वंस अगेन। ऐसा नहीं है कि दे हैव बीन लेफ्ट आउट, कि ये तो अब भाई फॉर एवर ये बेचारे बीमार ही रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। अगर किसी की लेग इंजरी होती है, आप किसी को भी टांग टूट गई, फ्रैक्चर हो गया, तो ऐसा तो नहीं है कि उनको आपने हमेशा एक टैगलाइन दे दी है कि ये तो भाई पक्का ये तो लंगड़ा है, ऐसा तो नहीं है। वो ठीक हो गए, देन यू स्टार्टेड बिहेविंग नॉर्मली विद देम, आप उनका वो नॉर्मली रन करने लग गए, ऑफिस जाने लग गए, स्कूल आने लग गए, है ना। सो मेंटल इलनेस में भी ऐसा ही होना चाहिए कि अगर एक डिप्रेसिव एपिसोड से या फिर एक साइकोटिक एपिसोड से समवन हैज बीन थ्रू, नो प्रॉब्लम, अब ठीक हो गए हैं, दे कैन कम बैक एंड नॉर्मल स्कूलिंग, नॉर्मल वर्क, ये सब स्टार्ट हो जाना चाहिए। एवरीवन शुड बिहेव विद देम नॉर्मली, बट ऐसा होता नहीं है बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा अटैच्ड, कि ये वंस पीपल लेबल देम कि ये तो जी मेंटली इल है, ऐसा नहीं है। जैसे टांग टूटी थी ठीक हो गई, वैसे ही मे बी ब्रेन में थोड़े बहुत इधर उधर हमारे केमिकल्स हुए थे और वो ठीक हो गए। सो रिहेबिलिटेशन एंड एम्पैथी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। बी काइंड। इसमें हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी दे सकते हैं अगर बहुत ही सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से दे आर going through and they can't make it back to their original workplace, then candle making, paper bag making, weaving, all भी जो एक होते हैं ना livelihood के लिए, we can alternatively suggest them certain vocations. Then प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी हम उनको भेज सकते हैं, वोकेशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग जिसमें रोल प्ले, इमिटेशन, इंस्ट्रक्शन। सो स्पेशली विद साइकोटिक पेशेंट्स जिनको फ्लैट इफेक्ट, ब्लंट इफेक्ट ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको रोल प्ले करके, थिएट्रिक्स करवा के वी कैन रियली हेल्प देम इमोट एंड बिहेव जस्ट लाइक दे वर बिफोर द इलनेस वाज प्रेजेंट। ओके। And cognitive retraining is improving basic cognitive functions such as attention, memory, executive function. तो अगर डिप्रेशन, एंजाइटी या ऐसी किसी आप बीमारी से you are coming back from it, then again focusing your attention, sustaining long hours of work, 8 घंटे काम करना है तो you have to sit at one place, you have to concentrate on your work. So all these things can be trained. So before you get reintroduced in the workplace, so that you can perform to a maximum 100% capacity. Okay. So this was the chapter about Therapeutic Alliance, in which we studied what is a therapy, what is a therapist, क्या क्या goals होते हैं, different types of therapies, किसके क्या benefits हैं, नुकसान है, and of course how important it is to rehabilitate the mentally ill and treat them as normal human beings. And I hope you are able to understand this chapter. If you have any kind of questions, feel free to leave them in the comment section and do subscribe to the channel. Thank you for listening to me.